actually today, tomorrow and day after tomorrow, yani aaj, kal aur parso, 11 a.m. in the morning, we'll be having this session where actually we are doing the AILET crash course revision. Okay, so today is part 1, and in today's part we are actually discussing constitution, governance and polity. So if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you are audible, so that we can start our session. Am I audible, guys? Okay, so here I'll be giving you questions and you are supposed to answer it in the live chat. Okay, yes. So let's start with the first question. So read the question carefully and then answer it. The first question says, which one of the following bill must be passed separately by both the houses and no joint sitting is allowed? These are your options: money bill, constitutional amendment bill, ordinary bill, finance bill. What is the right answer to this question? Anyone? What is the right answer, guys? Yes. किसमें joint sitting allowed नहीं होता है? It's separately passed by both the houses. यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा को separately pass करना होता है, इसमें joint sitting allowed नहीं होता है. What is the right answer to this question? Yes, very good. Many people are saying B. देखो, the right answer is constitutional amendment bill. It needs to be passed separately by both the houses of parliament. So B is the right answer to this question. Very good. B is the right answer. Yes. Let's move on to the next one. The question number 2, which says, which one of the following bill will be considered as passed even if the Rajya Sabha do not pass it in 14 days? Well, it passes in Lok Sabha, goes to Rajya Sabha, and Rajya Sabha do not pass it, and 14 days passes. Then it will be automatically assumed that the Rajya Sabha has passed it, even if it does not pass. तो कौन से बिल के साथ ऐसा होता है? Money bill, constitutional amendment bill, ordinary bill, financial bill. What is the right answer to this question? Anyone? What is the right answer, guys? Yes. Yes, very good. Many people are answering it. Jia, Jalin, Kaur, Devu, Tanusha. Yes, the right answer is A, money bill. So A is the right answer. So that is how it is. So a money bill passes in Lok Sabha and then it goes to Rajya Sabha. Rajya Sabha can suggest amendment, but it cannot do for much, and if it does not do for the next 14 days anything, then it will be considered to be passed. Okay. इसीलिए money bill के case में when I was discussing it, it does not require, it does not require joint sitting. तो joint sitting money bill में भी नहीं होता है, और because इसलिए कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में तो ऐसे ही पास हो जाता है, अगर नहीं पास हुआ तो, है ना. But ideally this statement is good for constitutional amendment bill and this is good for money bill. So A is the right answer to this question. Okay. Let's move on to the next one. As per the order of precedence, who among the following is highest in the rank? इन चारों में से सबसे ऊपर कौन सा है? Order of precedence समझते हो ना? So for the first, second, third, and now fourth and all. So the officers ranking, or the ranking of the president, prime minister, vice president, CGI. These are called as order of precedence. तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन सा होंगे order of precedence में? Can anyone tell me? Anyone, guys? So I'm waiting for the answers. Okay, so the right answer is actually, let me show you first. So the rank 1, in order of precedence, the topmost is president, then vice president, then prime minister, then governor of states, then former president, then deputy prime minister, and CGI and speaker of Lok Sabha is at one place. ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें जो सबसे ऊपर है वो सी होगा ऑप्शन. देखो डेप्यूटी पीएम यहाँ है, ठीक है, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ है, ठीक है, गवर्नर यहाँ है, स्पीकर ऑफ लोकसभा और नीचे. सो द in this category, in this case, the answer is C. Order of precedence में इन चारों में सबसे ऊपर governor of a state within his or her state. C is the right answer to this question. तो ये सब पता होना चाहिए. Rank 1 is president, then vice president, then prime minister, then governor of the state, in that state, former president, then deputy prime minister, then CGI and speaker of Lok Sabha at one place. Then you can see the cabinet minister, the chief minister of state, the deputy chairman planning commission, former prime minister, leader of opposition, Lok Sabha, Rajya Sabha, ये सब एक rank पर आते हैं. Okay. So you should be knowing it. Then holder of Bharat Ratna. फिर आते हैं ambassadors, chief ministers of state, governor of states and all, है ना. So this you should be knowing. Then judges of Supreme Court. Then यहाँ पर देखो सारे same है. Chairman of UPSC, chief election commissioner, CAG, all three are at one rank. ठीक है.
So ये सब पता होना चाहिए. Then these are the things and all. This attorney general, cabinet secretary, lieutenant governors on one place. Then उसके बाद फिर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, है ना. So these are the things you should be knowing it. इतना डिटेल नहीं जाना, शुरू के 8-10 याद होने चाहिए up till 9th, है ना. Because yes, these types of questions can be asked in exam. Okay, the next one is the question number 4, which says, which of the following bill does not require prior consent of president before being introduced in the parliament? Money bill, bill that seeks to alter the boundaries of the state, bill which seeks impose restriction upon freedom of trade, constitutional amendment bill. कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसको लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है. सो बिफोर प्रायर कंसेंट, एक होता है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन कर रहे हैं, बट देयर आर सम बिल इन विच द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस दैट बिल. सो इसमें से कौन सा वासा नहीं है? एनीवन? जी, डेप्यूटी पीएम जो है ना, अभी कोई नहीं है. समवन इज आस्किंग सर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, but we have seen in the past, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल 𝗟𝗂𝗙𝗵𝗹 was the deputy prime minister when 𝗟𝗏 𝗏𝗵𝗹 was the prime minister. Similarly, और पास्ट में 3-4 बार हुआ है, but currently we do not have any deputy prime minister. ठीक है. Okay, does not require prior consent, so the right answer is option D. Constitutional amendment bill के लिए prior consent नहीं चाहिए. Okay, you should be knowing it. Money bill requires prior consent of president. Bill that seeks to alter the boundaries, article 3 में जो होता है उसको ही चाहिए होता है. Or a state which imposes restriction upon freedom of trade, in that case also we require the prior consent. So the right answer is does not पूछ रहे थे, so the right answer is constitutional amendment bill. So D is the right answer. So constitutional amendment bill can be initiated in either of the two houses without even the permission or prior consent of president. ठीक है. और आपको पता होना चाहिए money bill can only be introduced in Lok Sabha. That you should be knowing it. Then there is no confidence motion. It is also issued only in Lok Sabha. These are the basic things you should be knowing about it. है ना? Okay, let's move on to the next one. है ना? ये article 3 में change करने के लिए ना, so it needs the president approval and all. The next one, this was asked in AILET exam. ठीक है. Which of the following has been defined as heart and soul of the Indian Constitution by 𝗏𝗵𝗹 𝗏𝗏𝗀? Article 21, 32, 47, 44. What is the right answer to this question? सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 𝗏𝗏𝗹 𝗏𝗏𝗀. एनीवन? What is the right answer? Yes, the right answer is we had discussed it in the paid classes also. Yes, article 32. इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं ना. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, and it is one of the fundamental rights and all, है ना. ठीक है. So the people, the person has a right to move Supreme Court under Article 32. The power writ petition, है ना, सब यही आता है ना 32 में. So yes, yes, number of tax Jadin Kaur, you all right. B is the right answer. The next is question number 16. LSG, local self-government, can be best explained as an exercise in federalism, democratic decentralization, administrative delegation, direct democracy. इसमें से सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा होगा? एंड प्लीज टेल मी हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फादर ऑफ LSG, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? एनीवन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थर्ड टीयर गवर्नमेंट की बात हो रही है. ठीक है. और जब फेडरलिज्म की बात होती है सेंटर और स्टेट के केस में होता है. ठीक है. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ओके. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, आई नो कि इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर सकते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हो सकता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. है ना. जो पावर जो है वो सेंटर से नीचे की तरफ जा रहा है, सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, so you should be knowing it. Yes, Lord Ripon, very good. Father of LSG is Lord Ripon. And which constitutional amendment deals with LSG, local self government? कौन सा constitutional amendment हुआ था? Can anyone tell me? Very famous ones. I hope you are aware. So 73rd amendment and 74th amendment brought the concept of in constitution they brought this concept. However, the concept of panchayati raj was even before this amendment. ठीक है, इससे पहले भी था, but constitutional बना दिया गया, means it has been added in the constitution and 73rd and 74th amendment, है ना.
सो 73rd से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 74th से अर्बन लोकल बॉडीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज a constitutional government by definition is a government by legislature, popular government, multi-party government, limited government. What is the right answer to this question? बताइए तो. Yes, 73rd and 74th amendment. Good. हाँ. Constitutional government किसको कहते हैं? इसी को actually it is based on the concept of constitutionalism. एक टर्म दिया जाता है constitutionalism. ये भी यही से आता है. Which one is the most perfect answer? Constitutionalism या constitutional government is what? Let me see how many of you can answer it. Okay, आप लोग आंसर करो. If you do not know it, fine. Actually, it's the limited government. Always remember it. Constitutionalism का idea यही होता है that the government is limited, means the government has unlimited power. क्यों? Because government के पास limited power, unlimited power कब होगा? The government has unlimited power in case of dictatorship or let's say in kingship. Okay, but wherever you will find constitution, even the government is bounded by constitution. The government की power so limited है, so the government cannot cross the line and it should do all the decision, take all the decision inside the under the purview of constitution. Okay, ठीक है. So constitutional government या constitutionalism का ये मतलब होता है that the government is limited government, the government has limited power and it is limited by the constitution itself. ठीक है. So if the government takes any decision which is against the constitution, the Supreme Court will strike it down. ठीक है, इसीलिए इसको limited government term लिखा जाता है. It's a very famous thing. You should be knowing it. Constitutionalism या constitution government, इस तरह का क्वेश्चन AILET पूछते हैं कई बार. समझिए, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन. That is why I have given these types of questions. Okay, yes. The next one is the Panchayati Raj was first introduced in Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. If you tell me the year, I will be very happy. और अगर सिटी जगह का नाम बता दो, so I will be more happy. But at least स्टेट का नाम बता दो. सबसे पहले पंचायती राज इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? Anyone? Okay. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस. Everyone please press the like button. पंचायती राज was first introduced in Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. What is the right answer? Yes, the right answer is Rajasthan. A is the right answer. Yes, Devu, Niharika, Devashri, you all right? Anna. Okay. October 1959 को नागौर एक प्लेस है राजस्थान में, यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर. यस, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली. जैसे हमने बताया ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो अर्बन लोकल बॉडीज में होता है उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं. सो ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनफैक्ट पूरे एशिया में. कहाँ हुआ था? फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन वेयर? ओके, द राइट आंसर इज मद्रास. बी इज द राइट आंसर. यू शुड रिमेंबर इट. ठीक है, 1688 में मद्रास में. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पंचायत? ये बताओ. देन बताओ व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग लोकसभा एमपी एंड व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग राज्यसभा एमपी? व्हाट इज द राइट आंसर? मिनिमम एज फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पंचायत, हाँ, इज 21. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. लोकसभा में 25 है. वेरी गुड गौरी सेठी. एंड राज्यसभा में 30 है, नॉट 35. ठीक है. So here पंचायत के लिए मेंबर बनने के लिए 21. ये सही. वोटिंग के लिए मिनिमम एज 18 है. The right to vote starts from 18 years. If you want to become a member of पंचायत, you should be 21. If you want to become a Lok Sabha MP, 25. Rajya Sabha MP, 30. If you want to become a president of India, vice president, governor, उस केस में 35 होता है. Okay? राज्यसभा में 35 नहीं होता, 30 होता है मिनिमम एज. ठीक है. So you should be knowing about it. So these are basic things, but exams में आते हैं, so आपको पता होना चाहिए. Okay? Yes. Let's move on to the next one. The idea of welfare state is found in preamble, DPSP, fundamental rights, fundamental duty. ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे आपको ये याद करो, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ? जब भी जनता की भलाई की बात हो रही, वेलफेयर स्टेट में क्या होगा? मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, ऐसा सोचो, है ना. सोशल जस्टिस की बात कही जाएगी. सोशल जस्टिस, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, है ना. प्रोवाइडिंग
पुअर को ई फ्री लीगल एड की बात कही जाएगी, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, ये सब बताया है कि नहीं, सब डीपीएसपी में आता है. इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज एक्चुअली सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है कि नहीं, सारी चीज, मैटरनिटी बेनिफिट है ना, these all are the things talking about it. Then talking about the weaker sections and all, minimizing inequality, providing free legal aid, so all actually comes here. So the idea of welfare state is in DPSP, Directive Principle of State Policy, Part 4. Yes, B is the right answer. बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है. Very good. The next is, which of the following reflects the mind of the constitution makers? इसमें से कौन सा constitution makers का mind reflect करता है? ये सब सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है. So that is why I'm asking it. Mind of the constitution makers. तो mind of the constitution makers का मतलब है ideals of the constitution. Directly यहाँ पे mentioned है. कहाँ मिलेगा आपको? Ideals of the constitution. यानी जितने भी मेन आइडियल्स है कहाँ मिलेगा आपको? प्रियम्बल में मिलेगा. सो इफ यू रीड प्रियम्बल, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. दीज आर आइडियल्स. यानी कि हमको इंडिया को ऐसा बनाना है. We have to make India like that. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. There should be justice, liberty, equality, fraternity, brotherhood, etc. and all. है ना? तो ये सब ideals है. तो ये you will find it in preamble. So A is the right answer to this question. Yes, objective resolution. Very good. Is the precursor of preamble. Okay. The next is, in India, separation of judiciary from executive is enjoined by what? कहाँ पर ये mentioned है? मैंने पढ़ाया था. I have taught these things in our paid classes. Preamble, DPSP, 7 schedule, conventional practice. कहाँ mentioned है? Separation of judiciary from executive. Yes, Gauri Sethi, very good. हाँ, DPSP mentioned Article 50 है ना? क्या लिखा है? State shall take steps to separate judiciary from executive in public service and all. So B is the right answer to this question. Yes, Tanushka, Devashri, you all are right. B is the right answer. Okay, the next one is question 14. Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Committed judiciary, centralization of power, elected government, separation of power. ये भी एक बहुत फेमस एग्जाम में पूछा गया और एलेट में आप देखोगे. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम से वो कॉपी करते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन टफ होगा, आई एग्री, बट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोच सको. यू कैन थिंक. दीज आर सम ऑफ द न्यू क्वेश्चन सो दैट यू कैन थिंक फॉर द क्वेश्चंस. यस, बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी. देखो मैंने बताया है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और मैंने बताया है स्पेशली जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, खास करके, है ना. एंड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. सारी ऑर्गन एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती है कि नो वन शुड क्रॉस द लाइन, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ द जजेस if judge has done something wrong, then the legislature, the parliament will remove the judge. ठीक है. अब उल्टा देखो, if the parliament passes a law which is against the constitution, the supreme court will strike it down. ठीक है. तो तीनों जो बैलेंस बना हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से. Yes, and that is why this ensures safeguard of liberty and all, right? है ना. So the right answer is D is the right answer to this question. Okay. Yes, just before moving on, guys, those who are new, so please download our app है BYJU'S exam prep app, and go to CLAT section. And today also we'll be having a session on our app. So CLAT 2025 Prepify है, इसमें जाना, view all पे click करना. So when you click on it, यहाँ पर upcoming class है today at 6 PM, quiz based on recent articles from newspaper. So this is specifically for 2025 student, but जो इस साल AILET दे रहे हैं वो भी join कर सकते हैं. Those who are attempting AILET this year can also join this, because they will also get benefit out of that. Okay, so yes, so do join it at 6 PM on our app. Okay, और ये CLAT success kit is also available, so you can go and join on our app. ठीक है. One more thing, on 9th December at 11 AM in the morning, we'll be having a scholarship test. If you qualify this, you will get up to 90% off on this course. So CLAT 2025 UG course है. We are so those who are planning for next year, he or she can call on this number 9538895678. अगर कोई query है इस course से related, है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लो. If you want this at a cheaper rate, then go for this scholarship test 9th December 11 AM in the morning. Okay, yes. Let's move on to the next question. Question number 15. Which of the following have the right to vote in the elections of Rajya Sabha? राज्य सभा का जो इलेक्शन होता है इसमें किसका अधिकार होता है वोट करने? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. पहले तो आपको लोअर हाउस और अपर हाउस पता होना चाहिए. लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं? लोकसभा को. ठीक है. अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं? राज्यसभा को.
अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? अगर राज्यसभा के एमपीज को चुनना है तो कौन लोग वोट करते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन? I haven't got the correct answer. Okay. देखो कुछ लोग बी कर रहे हैं. आप इमेजिन करो राज्यसभा के एमपी को चुनना है और राज्यसभा के लोग खुद ही लोग वोट करेंगे. आपको लगता है? डू यू थिंक डज इट मेक सेंस? What is the right answer? The right answer is option D. Elected MLAs vote. Elected MLAs, member of Legislative Assembly, vote for the Rajya Sabha MP. Always remember. राज्यसभा के एमपी के जब इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड एमएलएस जो होते हैं वो वोट करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, elected MLAs vote for it. Again the same concept, PRSTV, proportional representation through single transferable vote, जो प्रेसिडेंट के केस में भी होता है. This was asked in the CLAT last year as well, है ना. So through proportional representation through single transferable vote, the elected MLAs from the state vote for actually the Rajya Sabha and all. ठीक है. So D is the right answer to this question. इसको Council of States भी कहते हैं. That is why. इसीलिए इसको Council of States कहते हैं, because states elect. State legislature MLAs elect them, and that is why Rajya Sabha is also called as Council of States. ठीक है. So D is the right answer. Okay, let's move on. है ना, आप देख सकते हो ना, इसमें लिखा हुआ भी है. Elected by elected members of Assembly of States and Union Territory in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, PRSTV. ये लास्ट ईयर क्लैट में पूछा भी था, वो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, यस. The next is, according to the constitution, which of the following are fundamental for the governance of the country? DPSP, fundamental right. Preamble, fundamental duties. कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म मेंशन है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये कहां मेंशन है? किसकी बात की जा रही है? एनीवन? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. व्हाट इज द राइट आंसर? ओके, यस, द राइट आंसर इज DPSP. अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ोगे, इट्स रिटन कि दे आर टॉकिंग अबाउट इट इज ऑल्दो इट इज नॉन इन्फोर्सेबल. मैंने बताया है कि नॉन इन्फोर्सेबल होता है, बट नेवरदलेस द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस एंड शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, है ना. फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री DPSP कहलाएगा. ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग इट. दीज आर द पास्ट क्वेश्चंस. AILET वगैरह में सब क्वेश्चन आप पूछते हैं इस टाइप के. सो A is the right answer to this question. The next is the Constitution of India recognizes. ये इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये शायद AILET में पूछा भी था इस तरह क्वेश्चन. Only religious minority, only linguistic, religious and linguistic, religious, linguistic and ethnic minorities. What is the right answer to this question? Sir, please reply. Sir, 90 में top 4. हाँ, yes. If you are getting 90, yes, most likely you will get top 4, 5. हाँ. What is the right answer? Constitution of India recognizes which minority? Yes, Gauri said it right. Religious and linguistic minorities की बात होती, ethnic minorities नहीं लिखा हुआ है. So actually, if you read Article 30, they talk about it. All minorities whether based on religion or language. अच्छा, ये क्वेश्चन आया भी था जामिया में इस साल, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कहाँ कौन से आर्टिकल में मेंशन है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जामिया. So this type of question can be again asked. So religious and linguistic minorities are being talked about. So C is the right answer. Okay? Yes. Yes, निखिल वर्मा, देवेश्री, all right. Okay, religious and linguistic minority की बात करता है Constitution. The next is Parliament consists of. ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है. लोकसभा and राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा and CJI, लोकसभा, राज्यसभा and president, none of the above. And which article talks about it? अगर आप आर्टिकल का नाम बता दोगे, I will be more happy. But yes, just you should be knowing it. Parliament consists of what? Anyone? Yes, Gauri Sethi, Devashri, Nikhil, you all are right. Article 79, if you read, it clearly says it consists of Lok Sabha, Raj Sabha and President. So Lok Sabha की जगह they will be writing House of People in Article 79, and Raj Sabha के place में they will be writing Council of States. Both are same thing, ठीक है. And President of India, Article 79 clearly mentioned. Okay, yes, Gauri Sethi, very good. हाँ. Okay, yes, हाँ, लिखा ना है. Council of State is Raj Sabha, House of People is Lok Sabha. Okay, the next is which of the following schedule is amended when the new state is formed? First schedule, second schedule, third schedule, fifth schedule. जब एक नया स्टेट बनाया जाता है तो कौन से शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है? What is the right answer? Means I'm asking कि which schedule talks about, mentions the name of states and union territory. कौन से शेड्यूल में mentioned है?
एनीवन? आर्टिकल फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम मेंशन होता है. So if you are adding a new state, inserting a new state, removing it, if the parliament is doing that, in that case, the first schedule gets amended or changed. So A is the right answer to this question. You should be knowing it. Okay. The next is the purpose of inclusion of directive principle of state policies to establish political democracy, social, Gandhian, social and economic democracy. कौन सा सबसे most appropriate answer है? Most appropriate answer कौन सा इसमें से? डीपीएसपी जो स्टैब्लिश किया गया है वो क्या चीज के लिए? इंक्लूजन इन व्हाट? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मैंने आपको थोड़ा देर पहले, आई थिंक 15-20 मिनट्स बैक, आई डिस्कस्ड इट दैट डीपीएसपी, द मेन जॉब ऑफ डीपीएसपी इज टू इंश्योर, यस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. यस गौरी सेठी, वेरी गुड. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करती है, ठीक है. सो दोनों, सोशल समाज, सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, है ना. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, है ना. गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की बात करते हैं ना. मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, राइट. इकोनॉमिक वेल्थ, मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब की बात होती है ना. सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों की बात होती है. सो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर. डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. Okay, the next one is the idea of concurrent list has been taken from where? Ireland, Australia, UK, USA. Concurrent list का आइडिया कहां से उठाया गया है? Anyone? It has been taken from Australia, so B is the right answer. Ireland से जो है DPSP उठाया गया, ठीक है. So here the right answer is B is the right. Fundamental right USA से उठाया गया. So yes, Gauri Sethi, very good. Devu, you are right. B is the right answer. Australia is the right answer. The next is prohibition of child labor is mentioned where? Article 21, 23, 24, 27. What is the right answer? Prohibition of child labor कहाँ mentioned है? Okay, the right answer is 23 mentioned. देख लेना ना. Prohibition of trafficking in human beings and forced labor and all. So B is the right answer to this question. Yes, yes, Gauri Sethi, very good. B is the right answer. The next one is who among the following was the chairman of Union Constitution Committee? Bhimrao Ambedkar, Jawaharlal Nehru, A.K. Iyer, J.P. Kripalani. What is the right answer? देखो, अगर आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी इज आस्क्ड, देन एवरीवन कैन आंसर इट. सो द राइट आंसर इज भीमराव अम्बेडकर. बट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे जवाहरलाल नेहरू थे. देखो दिखाते हैं, है ना. तो दीज आर फेमस कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी का भीमराव अम्बेडकर, यूनियन पावर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन विच इज बीइंग आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम, ठीक है. ये वाला वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल. ओके. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड द मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट टू 15% ऑफ लोकसभा एमपीज. तो एक्चुअली होता क्या, वी आर हैविंग टोटल लोकसभा में 543 सीट्स, राइट. सो एट मैक्स द मिनिस्टर्स, कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं यूनियन में? 15% ऑफ 543, ठीक है. ये आई थिंक 81 पॉइंट समथिंग, 82 के आसपास आता है. मतलब द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट हैव मोर देन 82 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, 15% से ज्यादा, ठीक है. ये कहां मेंशन है? वेयर इट इज मेंशन? यस, वेरी गुड गौरी सेठी, वेरी गुड. 91st amendment talks about it, so A is the right answer. Yes, Devu, you are right. A is the right answer to this question. Okay, you should be knowing about it. The next is which of the following is not a fundamental duty? To vote in public elections, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideal. इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, आपको बताना है. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. यस, which of them is not a fundamental duty? इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, आपको बताना है. यस, एनीवन? वेटिंग फॉर द आंसर्स. ए होगा, ठीक है. देवेश्री इज राइट. हाँ, देवू, यस. हाँ, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मेंशन है. साइंटिफिक टेम्पर की बात कही गई. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ मेंशन है. यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है ना. अपहोल्ड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना. और आपको दिखाते हैं डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑल आर मेंशन्ड, बट दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट वोट इन पब्लिक इलेक्शंस. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है.
so you should be knowing about it. हाँ, yes. सर चाइल्ड लेबर वाले क्वेश्चन में आर्टिकल 24 होना चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन एंड फोर्स लेबर. अच्छा सॉरी, आई वाज आस्किंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. यस, थैंक यू, करेक्शन. हाँ, यस यस सिद्धांत, यू वर राइट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. इट शुड बी आर्टिकल 24. अगर प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर कहा जाए देन इट शुड बी आर्टिकल 23. ठीक है, क्योंकि आई वाज आस्किंग चाइल्ड लेबर, सो आर्टिकल 24 होना चाहिए. सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. यस, okay, yes. Let's move on further. Right to vote is a what? Fundamental right, constitutional right, legal right, socio-economic right. What is the right answer? Right to vote क्या है? हाँ, right to vote ड्यूटी नहीं है, but it is a, I know it is a slightly tough question. ठीक है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुआ था, एक जगह एग्जाम में पूछा गया था, वेरी फेमस गवर्नमेंट एग्जाम में. बट इट इज नॉट, देखो सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहीं कहीं कहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एग्जाम्स एंड नॉन गवर्नमेंट एग्जाम्स दे कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज 325 और 326 में मेंशन्ड है. देखो 325 बात करता है नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल इन अ स्पेशल रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. तो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात करता है, आर्टिकल 325, एंड 326 टॉक्स अबाउट एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो इफ यू रीड 325 and 326 together, you will get to know that it is talking about universal adult franchise. ठीक है, which is a constitution. It is mentioned in constitution, so that is why it's a constitutional right. ठीक है. Okay, the next is the distribution of powers between center and state in the constitution is based on 1909 Government of India Act 1990, 1935, 1947. Distribution of power center and state. जब भी distribution of power की बात होगी, we must be talking about what? The list, the three list, union list, state list, concurrent list, यही बात होगी ना. यही से तो पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, राइट. सो ये तीन जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हद तक डेवलप कहाँ किया था? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टॉक्ड अबाउट इट, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देयर थ्री लिस्ट, दे गेम फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात कही गई थी, राइट. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट that we have taken. In fact, ऐसा कहा जाता है, majority of the things in constitution we have perhaps taken from Government of India Act 1935. So C is the right answer. Yes, Nikhil, Verma, Tanusha, Ritika, you are right. C is the right answer. Now the next one is economic justice as one of the objective is mentioned where? Preamble and fundamental right, preamble in DPSP, fundamental right in DPSP, none of the above. Economic justice की बात कहाँ कही गई है? देखो अभी थोड़ा देर पहले I have talked about social and economic justice in case of DPSP. तो जहां पर DPSP है, इसको इधरों काट दो. अब इसमें आप देखो इकोनॉमिक जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट में क्लियरली कही गई, प्रियम्बल में. इट्स मोर परफेक्टली डन इन प्रियम्बल. देखो यहाँ दिखाता हूँ, हाँ जस्टिस है ना, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, साफ लिखा हुआ प्रियम्बल में. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट DPSP is also talking about social and economic justice. ठीक है, सो द राइट, द मोस्ट परफेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, हालांकि आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में भी इनडायरेक्टली नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट इट, बट क्लियरली इट इज मेंशन इन प्रियम्बल एंड DPSP. ठीक है, दे आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको. और फिर ये पूछते हैं कौन सा डेट मेंशन है प्रियम्बल में, है ना. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो 26 नवंबर 1949. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे कहते हैं इसको. ओके, द नेक्स्ट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड वेयर. अब आप ऐसे सोचो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द ड्यूटी ऑफ व्हाट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कॉमन मैन की थोड़ी ड्यूटी है कि इंटरनेशनल पीस कर सके ना. सो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर कॉमन सिटीजन, सो दैट कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना. इट इज एक्चुअली द DPSP. आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इट क्लियरली, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल. सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. यस, गौरी सेठी, वेरी गुड. जी यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. देवश्री, यस, बी इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ मेंशन्ड है. ओके, द नेक्स्ट इज, देखो अब कुछ देर बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग AILET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, so that it would be beneficial for you. Which of the following is considered as very important, very 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 important, is considered as the custodian of the constitution. Custodian को एक तरह से guardian भी कई बार लिखते हैं लोग, but custodian is the best term to be used here. President of India, PM of India, Lok Sabha Secretariat, Supreme Court. What is the right answer? Yes. So the most appropriate answer is Supreme Court of India is called as custodian of Constitution. Yes. Gauri Sethi, Jia, Devashri, yes, Ritika. Custodian of Constitution is Supreme Court. ये पता होना चाहिए, ये very 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 important है. ये सब सिंपल, अगर ये सब क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है एग्जाम में,
ये सब गलत भी नहीं होना चाहिए. These are very easy, low hanging fruits. Okay, the next is to uphold, protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned where? ये सब मैंने पढ़ाया है पेड क्लासेस में. अगर आपने गौर से पढ़ा होता you could have answered it. Sovereignty, ये किसकी बात कर रहे हैं? कोई एक जनता की बात हो रही. टू अपहोल्ड, इट इज द ड्यूटी, है ना, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इट्स द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. हर नागरिक का ये कर्तव्य है. अभी मैंने दिखाया, एंड दिस वी हैड डिस्कस्ड इट, है ना. So article 50, actually fundamental duty article 51 capital A talks about it, है ना. हर नागरिक की ड्यूटी है ये कि वो प्रोटेक्ट करे यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज ए. कुछ लोग हो सकता है डीपीएससी मार्क कर रहे हो, बट नो, ये पूरा क्लियर स्टेटमेंट मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में. आई हैड टॉट इट, और कुछ देर पहले भी मैंने बताया था. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. ओके, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल. मैंने प्रीएम्बल के सारे आइडियल्स बताया है पहले भी. एंड अगेन आई एम आस्किंग लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ. व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें से कौन सा लिबर्टी मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में? एक दो बार आप प्रीएम्बल भी रीड कर लेना, है ना. व्हाट इज द राइट आंसर? और द राइट आंसर इज इकोनॉमिक लिबर्टी. देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात हुई है. ठीक है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं नहीं बात हो रही है. ठीक है. अगर आप देखो ये ऑड वन आउट है. सबको लिबर्टी ऑफ से स्टार्ट है. सो दिस इज एन ऑड वन आउट. यू कुड हैव आंसर्ड इट. सो बी इज द राइट आंसर. आप ऐसा करना, एक बार ना 2-3 बार इसको पढ़ लेना. की टर्म, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. ये सब सारे टर्म्स मैंने पेड क्लासेस में आई हैव ऑलरेडी टॉट इट. ठीक है. कि विच डेट एंड ऑल, है ना. 3 न्यू वर्ड्स वर इंसर्टेड. कौन सा 3 न्यू वर्ड है जो प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट? गो एंड फाइंड आउट. We have already taught these things in our paid classes. ठीक है. Now the next is please read the question carefully and answer it. ये भी हमने पढ़ाया है paid classes में. Fundamental duties से related है. Okay. And this is a previous year question. Which of the following statement is correct about fundamental duties in the Constitution? Fundamental rights were the part of the original Constitution. A person can be merely sued for failure or to abide by the fundamental duty. What's the right answer? हाँ, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी बाद में ऐड किया गया. गुड देवू. हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. इट वाज एडेड लेटर ऑन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. आर्टिकल 51 कैपिटल ए बाद में ऐड किया गया. ओके. A person can be sued for failure to abide by fundamental duty. No, fundamental duties are non-enforceable. मैंने बताया था कि non-enforceable होता है. So the right answer is option D. Yes, देवू से जलीन कौर, you are right. D is the right answer to this question. दोनों में से कोई भी सही नहीं है. We have already discussed it. ठीक है. Okay, the next is how many amendments have been done so far? अभी के हिसाब से today I am talking about. What is the answer? अब तक कितना amendment हुआ है? And the latest one कौन सा बताइए तो? Latest amendment. The latest one, Women's Reservation Bill 106 है वो, है ना. D is the right answer. Yes, Gauri Sethi, very good. हाँ. So the most latest one is 106, talking about actually providing reservation in Lok Sabha and Legislative Assembly 33% for women. ठीक है. ये सब पता होना चाहिए. It is the right answer. Yes. Okay. The next one is देखो ये सब मैंने अटैच कर दिया. जैसे 101 GST की बात कर रहा है ना. So you should be knowing it. 103 talking about EWS reservation. ठीक है. फिर National Commission for Backward Class 102 है. ये AILET में पूछा हुआ है. This they have asked it. ठीक है. The National Commission for Backward Class, है ना. This was there. So they are asking these types of questions. 99th Amendment, NJAC से related है, which was supposed to replace the collegium, but unfortunately, I mean, the Supreme Court struck it down. NJAC है ना, तो NJAC का मामला खत्म हो गया. So you should be knowing these things. Okay, the next is which of the following cannot cast their votes through postal ballot? इनको service voters कहते हैं. ये भी मैंने पढ़ाया था पेड क्लासेस में. बताइए, इनमें से कौन जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं रिमोटली यानी घर से दूर. पोस्टल बैलेट से प्रोविजन होता है वोट करने का, बट एक जो है वो नहीं कर सकते. व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने बताया था कि सिमिलर ऑप्शन में आंसर ढूंढा करो. सो द राइट आंसर एक्चुअली इज सी, दे कैन नॉट वोट, है ना. आर्म फोर्सेस के लोग को यस दे कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन आल्सो वोट. द गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड आउटसाइड इंडिया कैन आल्सो वोट, बट ये नहीं. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है. अब कुछ लोग डी मार रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ, क्लियरली इट्स मेंशन.
है ना. I am showing from Election Commission of India's website. The electors under preventive detention are entitled to cast their votes by post. लिखा है according to the election rules. So D cannot be the answer. ठीक है, they can vote. ठीक है, army officers can also vote, they can also vote. So the right answer is C. ठीक है, सर्विस वोटर्स कहते हैं इनको, है ना. सर्विस वोटर, मिलिट्री के ऑफिसर्स, है ना, आर्म फोर्सेस एंड ऑल, है ना. यस, who is employed under government of India posted outside and all, है ना. The next is okay, the next one, joint session of parliament is presided over by whom? Presided over by Speaker of Lok Sabha, Vice President, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Chief Justice of India. ठीक है, ऐसे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए. I'll tell you why. Because in some cases C can also be correct. ठीक है, कई जगह आउटसाइड द स्टेट्स हैं तो उनको भी सर्विस वोटर्स इंक्लूड किया जाता है. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अ स्लाइटली ग्रे एरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सी भी हर केसेस में आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई थिंक दिस वाज नॉट करेक्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन. खैर, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय, ये भी एलेट का प्रीवियस क्वेश्चन है. ज्वाइंट सेशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 1-2 साल पहले पूछा है. ज्वाइंट सेशन मतलब आर्टिकल 108. सो व्हेन एक्चुअली कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स एक साथ बैठ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ज्वाइंट सेशन. इन दैट केस हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मेन पीछे बैठते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा. यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं. द नेक्स्ट इज हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. ये तो बहुत फेमस है, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. It means whosoever is holding this post will automatically become the chairperson of, or chairman कह सकते हो, chairman of Rajya Sabha, whatever it is. हाँ, vice president is ex officio chairperson of Rajya Sabha, so B is the right answer. This is very famous question, everyone knows it. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗃, very good, B is the right answer. Who is the first Supreme Court judge, woman Supreme Court judge who died recently? ये पूछ सकते हैं एलेट में. ठीक है, इसलिए जब उनका डेथ हुआ तो शायद उसका एलेट का क्वेश्चन ना बनाओ. फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की, अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, आई थिंक मे बी 1 वीक बैक आई गेस, एंड शी डाइड रिसेंटली. ये पूछ सकते हैं कि गवर्नर भी रही थी, सो विच स्टेट शी वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट आल्सो आफ्टर बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. यस, जस्टिस फातिमा बीवी. कहाँ की गवर्नर रही थी, एनीवन? सो यू शुड बी नोइंग इट. शी वाज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एज वेल. ठीक है, 97 से 2001. फिर मेंबर ऑफ NHRC भी रही हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 1998 टू 92, 3 साल के लिए. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग इट. बॉर्न इन केरला एंड ऑल. ओके, द नेक्स्ट इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ये एलेट ने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, आई थिंक 2 बार, और 2 बार से ज्यादा भी हो सकता हो. व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, she was earlier the governor of Tamil Nadu. Yes, Tamil Nadu, good. What is the right answer? Chairperson of NHRC is Justice A.K. Mishra, Arun Kumar Mishra, है ना, former judge of Supreme Court. So the right answer is C. Yes, Jia Tanushka. Any ex-Supreme Court judge can become the chairman of NHRC. पहले था ना ex CJI था लिखा हुआ, but this got amended and now any former Supreme Court judge can become the chairperson of NHRC. ठीक है, so C is the right answer. You should be knowing it. In which schedule you will find 22 languages? Originally 14 language mentioned था, later on many new languages added and currently we are having 22 languages. Always remember इसमें से English नहीं present है. So because this question is asked many times, कि which of the following language is not mentioned in the 8th schedule. ठीक है, so they'll give 4 options and one of them would be English. तो आपको English mark करना है because English is not one of those 22 languages, है ना, because that is not an Indian language ना. So B8 schedule is the right answer. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗃, 𝗟𝗏, you all are right. Tanushka, हाँ. Which of the following schedule talks about 3 list? Union, state and concurrent list, है ना. ये 3 schedule का concept जो है we have actually originally taken from Government of India Act 1935, है ना. अगर सिर्फ ये पूछा जाए concurrent list कहाँ से लिया गया, तब Australian Constitution. Otherwise, if they are asking कि 3 list का concept कहाँ से लिया गया, so the answer is Government of India Act 1935. ठीक है. Okay, what is the right answer? 3 लिस्ट कहाँ मेंशन है? 7 शेड्यूल में ना. सो 7 शेड्यूल टॉक्स अबाउट दैट, है ना. ओके, आफ्टर द क्लास इज ओवर, दिस इज आफ्टर द क्लास ओवर, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. कुछ टास्क है और आपको लिखना है. ठीक है, पहला है ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड. ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल्स, हाउ मेनी शेड्यूल्स
एंड हाउ मेनी पार्ट्स वेर देयर, ठीक है। और आंसर करना है कि करेंटली अभी जो है कितने शेड्यूल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस यू आर सपोज टू आंसर इट आफ्टर द क्लास इज ओवर, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. So this is the homework. Now I'll be meeting you tomorrow also 11 AM or day after tomorrow we will be having a session. So do join it. That would be very, very beneficial for you. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.